हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी गाइडेंस प्लेटफॉर्म। पहले तो आपको ढेर सारा सॉरी कि आई एम वेरी लेट फॉर दिस सेशन। और जो करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है आपकी स्पीडी की, उसके हम लोग ईयरली जो है अप टू ये आपके फरवरी 2026 तक की पीडीएफ है पूरी। आज हम 400 प्लस 400 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। देन आपके जो फर्दर बाकी जो 400 क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट करेंगे इन द सेकेंड पार्ट। ये आपका पार्ट 1 होगा स्पीडी के करंट अफेयर्स का, ठीक है। और आपका करंट अफेयर्स जो होगा वो यूपी एपीओ में 10 मार्क्स का आ रहा है। तो जो 10 मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक नंबर आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो डोंट वरी। अगर आप ये एमसीक्यूज़ भी सिर्फ लगा लेते हैं 800 के 800 एमसीक्यूज़, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू गेट एटलीस्ट 8 to 9 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स कंप्लीट नहीं आते हैं फॉर श्योर। जो भी कहता है कि आपके 10 मार्क्स के 10 मार्क्स पक्के हैं, नेवर। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा, या जनरल नॉलेज आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत खुद में ही बहुत वाइड होता है। तो यू नेवर नो फ्रॉम विच पोर्शन यू विल गेट द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक। लेकिन हम फिर भी एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, सारे करेंगे एमसीक्यूज़, इसलिए क्योंकि कोई चांस लेने से बेटर है to get prepared for everything. So let's get started with this. और एक चीज़ और, ये मैंने पहले से ही पढ़ के रखा हुआ है, तो जिसमें मैंने सर्कल किए हुए हैं एट द लास्ट ऑफ द रिवीजन टाइम, आपके जब आप रिवीजन करने वाले होंगे यूपी एपीओ के एग्ज़ाम के पहले, तो जो मैंने सर्कल मार्क किया है जिसमें मैंने स्टार या डबल स्टार ट्रिपल स्टार लगाया है, तो ये वो मस्ट वॉच क्वेश्चन होंगे आपके। ज़रूरी नहीं है आप हर एक क्वेश्चन पढ़ो एट द मोमेंट ऑफ योर रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे हो इट विल बी फाइन। अगर आप वो क्वेश्चन भी करते हैं, जैसे इसमें स्टार लगा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन पक्का पक्का देखो, श्योर होता है ये क्वेश्चन आपके आने में, ठीक है। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रूरल इमेज इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कुशन पीरियड कॉइन्स फाउंड एज यूनेस्को लिस्टेड भीर माउंट नियर टक्सीला। तो वासुदेव। Who has been appointed as chairman of Apparel Export Promotion Council APAC? A. Sakti Well. Who has become India's first completely paperless district? ये आपका important हो जाता है, कलपेट्टा केरला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपका कलपेट्टा है, लेकिन अगर आपको स्टेट लिख के आता है केरला कर्नाटका, ठीक है, मान लो कोई भी साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश, ठीक, तो आपको केरला ही करना है। तो कलपट्टा केरला कंप्लीटली पेपरलेस हो चुका है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट टू कॉमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमेन फॉर रोड कंस्ट्रक्शन? तो इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञान रंजन जो अभी पास्ड अवे हुए हैं, कौन से फील्ड को बिलोंग करते हैं? हिंदी लिटरेचर। विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड बुक फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली? तो 53rd। अब इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपका यही है कि वर्ल्ड बुक फेयर आपका ऑर्गेनाइज्ड कहाँ किया गया है? दिल्ली में, ये एक क्वेश्चन है। एंड दूसरा है कौन से नंबर का था? तो 53rd। During the construction of which expressway recently, National Highway Authority of India has created 2 Guinness World Record? तो बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेस, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न। पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पंखुड़ी नाम से ही समझ में आ रहा है, पंखुड़ी इज फॉर रिलेटेड टू गर्ल्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। The US withdrew its membership from 60 international organizations, including the International Solar Alliance. Where is the headquarter of International Solar Alliance? तो ये पता होना चाहिए, गुरुग्राम, हरियाणा। In which state the education program Sanskar Shala been started? Assam. Veteran environmentalist Medhe Gadkal passed away recently. इन्हें पद्म भूषण कब मिला था? 2006। इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 एज विच इंटरनेशनल ईयर? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पैस्चर एंड लॉजिस्टिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो लॉन्च की गई है वो कहाँ की गई है? हरियाणा में। जो फर्स्ट चीज़ें होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं खुद में, ठीक है। तो हाइड्रोजन पावर ट्रेन जो है वो पहली कहाँ लॉन्च हुई है? तो हरियाणा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द
Meher Tiger Reserve located Maharashtra. Jinson Johnson, who recently announced his retirement, related to which sport? Athletics. Mount Bur Nitlong volcano in the news is located in which country? Indonesia. वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 10 जनवरी. ठीक है. अब ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था? 2006. नागौरी अश्वगंधा प्रोडक्ट अवॉर्डेड जीआई टैग. तो ये कहाँ से बिलोंग करता है? राजस्थान. जीआई टैग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? तो ए के बाला सुब्रमण्यम. वेयर इज द नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो गुवाहाटी. Which country's citizens are allowed to travel to India under EB4 वीज़ा? तो चाइना. ये आपके जो यूएस वीज़ा से जो है काउंटर करने के लिए चाइना ने ये अलाउ किया था कि इंडियन सिटीजन्स जो है ट्रेवल कर सकते हैं अंडर द EB4 वीज़ा. तो किसने किया है ये अलाउ? चाइना ने. Who is the author of the book History That India Ignored, which was launched by Goa CM प्रेम प्रकाश? ये आपका जो 21 क्वेश्चन है इसमें EB4 वीज़ा याद रखिएगा. EB4 वीज़ा ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइना ने अलाउ किया है इंडियन सिटीजन्स को टू ट्रेवल टू इंडिया अंडर विच टाइप ऑफ वीज़ा? तो EB4 वीज़ा. Who has been appointed as new Chief Justice of Sikkim High Court? Justice A. Mohammad Mustaq. प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. कब स्टार्ट किया गया था? 2003 में. वेरी इंपॉर्टेंट. Ministry of External Affairs has issued an advisory on Iran. Which operation was carried out by government to evacuate Indians from Iran? तो Operation Sindhu. ये भी important है. The Ungal Convoy Solungal program has been launched by which state government? Tamil Nadu. What is the most prominent feature of Indian Army's modern warfare force? Bhairav. तो over 1 lakh drone operators force. Where was the phase 2 of cancer care training program for BIMSTEC countries launched? तो विशाखापट्टनम. Who chaired the first meeting of Payment Regulatory Board? संजय मल्होत्रा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर किया था? संजय मल्होत्रा. इंडियाज फर्स्ट अर्बन नाइट सफारी लखनऊ. ये भी इंपॉर्टेंट है. ग्रीनलैंड किसका पार्ट है? डेनमार्क. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में करेंटली था. वेयर इज द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुए थे आपके? दीयू घोगला बीच. ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इन विच स्टेट इज द कलाई 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन क्वेश्चन प्रपोज्ड? अरुणाचल प्रदेश. द ईयर 2026 एज द ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटर सिटी किसने डिक्लेयर किया? तो इंडियन आर्मी. ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सुरेश कलमाडी पास्ट अवे कौन से फील्ड को बिलोंग करते हैं? पॉलिटिक्स. Where was the regional AI Impact Conference 2026 held? Rajasthan. Where was the world second National Environmental Standard Laboratory inaugurated? CSI NPL, New Delhi. Important. Which made in India multi-caliber rocket launcher system has the Indian Army contracted? तो सूर्यास्त्र. ठीक है. मेड इन इंडिया मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है जिसका नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड. क्या नाम है मेड इन इंडिया? सूर्यास्त्र. मुद्दुमुलई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में. अर्थ रोटेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 8 जनवरी. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी. ऑन विच रिवर इज द विष्णुगत पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? अलकनंदा. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है आपका. ठीक है. विष्णुगत पीपलकोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ लोकेटेड है? कौन से रिवर पे? तो अलकनंदा. इंटरिम प्रेसिडेंट कौन है वेनेजुएला के? तो डेल्की रोड्रिग्यूज. Who will become the oldest woman to compete in the Australian Open main draw at the age of 45? Venus Williams. Very very important. ठीक है. According to the National Tiger Conservation Authority (NTCA), which state of India recorded the highest number of tiger death in the year 2025? तो MP. Mahesh शरद चंद्र सोनक हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट. कितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल? 25. वर्ल्ड वॉर ऑर्फन डे ऑब्जर्व 6 जनवरी. वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप? तो वाराणसी. इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS डेवलप किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी. Who has been appointed as the new Director General of Police of Maharashtra? Sadanand Vasant Date.
वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड एआई क्लिनिक बीन लॉन्च्ड? उत्तर प्रदेश। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट गवर्नमेंट है यूपी की जिसने एआई बेस्ड क्लिनिक लॉन्च किया है। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू अपॉइंट किया है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ केरला पटना मेघालय, तो कौन से प्रोविजन के थ्रू अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट जजेस? तो 217 आर्टिकल। हु चेयर द टास्क फोर्स सेटअप टू इम्प्रूव इंडियाज स्पोर्ट्स गवर्नेंस? अभिनव बिंद्रा। इंपॉर्टेंट हो जाता है। Prime Minister of India Narendra Modi on January 3 paid tribute to Rani Velu Nachiyar on her birth anniversary. Rani Velu Nachiyar, Queen of which present state of India? To Tamil Nadu. On which date World Braille Day celebrated? 4 January. ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू फुली इम्प्लीमेंट द कार्बन टैक्स? यूरोपियन यूनियन। इंपॉर्टेंट हो जाता है। Who was appointed as Director General of Directorate General of Foreign Trade? DGFT Love Agarwal। डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, ये याद रखना, लव अग्रवाल। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कंप्लीटेड 9 years, तो कब लॉन्च किया गया था? 1 जनवरी 2017। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था इट्स न्यू लोगो एंड मैस्कॉट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये पूछा जा सकता है। ठीक है। Who has taken charge as the Deputy Chief of Indian Air Force? Air Marshal Nagesh Kapoor. Where is the 44th Junior National Kho-Kho Championship being held? बेंगलुरु कर्नाटका। ये इंपॉर्टेंट है। खो खो चैंपियनशिप आपका कहाँ हेल्ड हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटका। Which country has become 21st member of Eurozone from 1st January? तो बुल्गारिया। Important. India has become the world largest rice producer, leaving behind China. Very important. Which country has granted legal rights to stingless bees found in Amazon rainforest? Peru. Who has been appointed as the head coach of Indian women hockey team? Sujord Barizane. The recently announced Kushavati district is going to be third district of Goa. Who has been recently appointed as chairman and managing director of Food Corporation of India? रविंद्र कुमार अग्रवाल। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन एमडी कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप 8th पे कमीशन? तो आसाम। द रिसेंट विंटर स्टॉर्म एजरा अट्रैक्टेड विच कंट्री? यूएसए। जलीकुट्टी फेस्टिवल आपका तमिलनाडु में। ये वैलिड है आपका कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, जलीकुट्टू पे एक केस भी था। ठीक। वेयर डिड इसरो कंडक्ट द सक्सेसफुल स्टैटिक ग्राउंड ऑफ टेस्ट ऑफ द एडवांस्ड SS3 स्टेज ऑफ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। ममादी दोम्बोया इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ग्यूनिया। ठीक है। हु बिकेम द हाइएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन T20 इंटरनेशनल? दीप्ति शर्मा। सिंस व्हेन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका 73 क्वेश्चन। सिंस व्हेन डिड द इंडियन ऑस्ट्रेलिया, एक सेकेंड, सिंस व्हेन डिड द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट MOU बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया केम इनटू फोर्स? फुली ड्यूटी फ्री ट्रेड, तो जनवरी 1 2026। ठीक है। फुली ड्यूटी फ्री ट्रेड किसके बीच में हुआ है अभी? इंडिया ऑस्ट्रेलिया। रशिया डिप्लॉयड द न्यूक्लियर कैपेबल ओरेंशिक मिसाइल सिस्टम इन विच कंट्री? बेलारूस। तो ये याद रखना कि रशिया ने डिप्लॉय किया है ओरेंशनिक मिसाइल, कहाँ से? तो बेलारूस। विच फाउंडेशन डे ऑफ DRDO? 68। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 जनवरी को आपको DRDO फाउंडेशन डे होता है। ठीक है, और उसका कौन सा फाउंडेशन डे था? 68 DRDO 68। Who received Global Lifetime Achievement Award at the 13th Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Sports Award? तो नोवाक जोकोविच। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Who has become first Indian woman to sky to the South Pole? Kamya Karthikeyan. Very important. Amira Khosla, who was in news recently. Which sport? Sport climbing. Which IPS officer has been given the additional charge of Director General of NIA, National Investigation Agency? Rakesh Agarwal. The proposal of declare Kamur Wildlife Sanctuary as a tiger reserve has been approved. It belongs to which state? Bihar. Very important. In which country is Muqada port located? Yemen. Which country has announced the Peace Prize to Donald Trump? Israel. Where was the first flight test of Pinaka long range guided rocket LRGR-20 conducted recently? Chandipur,
Odisha. In which state has the Green to Gold initiative been launched to promote cannabis cultivation? To Himachal Pradesh. Indian Navy ship INS SV Kondinya has sailed for which country? Oman. 86. In which state are the medical colleges to be developed on India's first triple P model being built? Madhya Pradesh. Which country will host the Artificial Intelligence Impact Summit 2026? India. Important. अभी चल भी रहा है. Who has become the second Indian player to complete 10,000 runs in women's international cricket? Smriti Mandhana. In 2025, what is India's global rank in terms of nominal GDP? Fourth. Index of Industrial Production in India is published by which ministry? MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. Khaleda Zia recently was the first woman prime minister of which country? Bangladesh. Khaleda Zia. Parvati Agra Bird Sanctuary has been declared an eco-sensitive zone. This bird sanctuary belongs to UP. Very important. President Draupadi Murmu sailed in the indigenous submarine INS Bakshir. INS Bakshir submarine of which class? Kalwari class. Which country does the first male bowler Sonam Yashe to take 8 wickets in a single innings of T20 international cricket belong to? Bhutan. In 2025, what rank did India secure rare earth oxide Rio reserves? Third. On which day is Global Family Day celebrated? 1st January. Delhi and Odisha, two new UTs, have joined Ayushman Bharat scheme 2018 launched. According to Hurun India Rich List, who become world richest Indian origin professional manager? Jayashree Ulal. Very important. Which country will host World Police and Fire Games 2029? 2029 में तो India. Nara Suparn lace craft seen in news recently related to Andhra Pradesh. Where did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the Rashtra Prerna Sthal on 25th December 2025? Lucknow. Important. Rashtra Prerna Sthal. The book Economic Empowerment of India in the Modi Era, recently authored by whom? Dr. Sikandar Kumar. Who developed ILA? AILA, the world first AI lab assistant system for scientific experiment, IIT Delhi. Which player has been nominated for 2025 Major Dhyan Chand Khel Ratna Award? Hardik Singh. Important hai. Who has been appointed as the captain of Indian team ICC T20 World Cup? Surya Kumar Yadav. Which state will present India's first rolling budget? MP. Which birth anniversary of former PM Atal Vajpayee, Bihar Vajpayee, celebrated on 25th December 101. Which country has announced plans to build a nuclear power plant on the moon by 2036? China. Who won the Syed Mustaq Ali Trophy? Jharkhand. Very important. What day has Australian declared December 21st as Reflection Day? Which country recently issued its first polymer 1 Rial note? Oman. Important. What is the mascot of the first Khelo India Tribal Games to be held in 2026? Morveer. Very important. Where is the famous Narpa Wildlife Sanctuary located? Meghalaya. Narpa, Meghalaya. Who became the first wheelchair used to travel to space? Michael La Benthos, very important, who has been awarded India's highest science award Vigyan Ratna. तो जयंत विष्णु नार्लिंकर, विष्णु जी को मिला है साइंस अवार्ड विज्ञान रत्न. Where was the शून्य से शतक program organized to commemorate the birth century of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee? Indore. The Shanti Bill passed by Parliament to reform nuclear sector. In which state has the Indian Coast Guard commissioned its first pollution control vessel, Samudra Pratap? Goa. Where was the joint military exercise Desert Cyclone? Between India and UAE held in Abu Dhabi. Very important. Who has been appointed as the new Chief Information Commissioner? राजकुमार. राज है इसलिए information देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं. राजकुमार गोयल. Who won the first SAF Women Club Championship 2025 held in Kathmandu, East Bengal? Who won the Best FIFA Women Player Award? Alexia Putellas. Who has been awarded the Transformational Leader of the Year 2025 award? Jay Shah. Which state ranked first in rooftop solar installation under PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana? Gujarat.
Which airport has been declared the world best airport for 2025? Singapore, Changi Airport. Where was the Indian Coast Guard ship Amulya commissioned? Goa. To which country has the US launched Operation Hawkeye against terrorist Afghanistan? Who won FIFA Arab Cup 2025 title held in Qatar, Morocco? From which country were the black-capped capuchin monkeys found? Imported by India, South Africa. Hansi became been made the 23rd district of Haryana. What new name has been given to Prime Minister office? Seva Tirth. Important. Who won the 2025 WTA Player of the Year award? Arena Sablanka. Viksit Bharat Ji Ram Ji Bill 2025, which replaced Manrega. How many days of employment are granted in a year? 125. Very important, 5 star. Where was the traditional boat race Umang got recently held? Meghalaya. Where has India's first nature themed airport terminal built? Guwahati. First nature themed airport terminal, Guwahati. Which word was the most searched on Google? Gemini. How many medals did India win in 5th Asian Youth Para Games? 56. Youth Para Games 56. Who has become the most expensive player in IPL? Cameron Green. Who won FIFA International Intercontinental Cup 2025 title? Paris Saint Germain. What is Dhruv 64, which was recently launched? Microprocessor. Who was awarded the FIFA Men Player of the Year Award 2025? Osman Dembele. FIFA Men. Osman Dembele. The annual joint naval exercise Ekant conducted between India and Maldives. एकांत में माला पहनाएंगे इंडिया को. एक कथा सॉरी एक कथा India and Maldives. Which is the first Asian country to win the Squash World Cup 2025? India. How many cities have recently been included in UNESCO Global Network of Learning Cities? 72. Which Gulf country honored PM Modi with its highest civilian honor in December 2025? Oman. Who has been elected as the first woman president of Press Club of India? Sangeeta Baru. First woman president of Press Club of India, Sangeeta Baru. Which states Ponduru Khadi given GI tag? Andhra Pradesh. Whom has Time magazine chosen Person of the Year in 2025? Architects of AI. By which year will India launch a human mission to space and deep sea? 2027. Which has been declared as India's 96th Ramsar site? Silisire Lake. आज हम 150 क्वेश्चन ही करते हैं, उसके बाद आगे जो 150 क्वेश्चंस होंगे उसकी वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में डाल दूँगी. सो थैंक यू सो मच.